uniformly minimum variance unbiased estimator in multiparameter case. The results of finding uniformly minimum variance unbiased estimator or simply minimum variance unbiased estimator can be extended for distributions having several parameters. For this, we have an excellent extension of the Rao-Blackwell theorem, which is given as: let x1, x2 up to xn be the random sample from the probability density function, that is this one, and let t1, that is t of 1, that is x1 up to xn, that is the function of x1 and x2 up to so on, because we are now considering for the generalized case, so it is going to extend that tn, that is actually tn into x1 x2 xn, be a set of jointly sufficient statistic for theta 1 up to theta k. Further, let h1 up to hr be an unbiased estimator of g of 1 theta, g up to so on g of or theta, where theta basically represent the theta 1 up to theta k. Then the statistic defined by t steric j, that is actually the generalized term which is represented by j, that is equal to the expected value of h of j, given that the set of sufficient statistic, jointly sufficient statistic, that is the more appropriate, that is t1 up to tn for j varies from 1 to r, are unbiased for g of theta 1 up to so on g of or theta, and has the smaller variance than the unbiased estimator h1, h2 up to hr. In addition, the generalized variance of the t1 steric up to t or steric is less than the generalized variance of h1 up to hr. Basically, रॉ-ब्लैकवेल थ्योरम को हमने एक्सटेंड किया है कि लास्टली तो हमने सिर्फ एक पैरामीटर के लिए उसको यूज़ किया था। अगर हमारे पास एक से ज़्यादा पैरामीटर आ जाते हैं, और ये सिचुएशन हमारे पास एग्जिस्ट कर सकती है जब हम एडवांस स्टेज पे जाएंगे। इसका जो प्रूफ है इस थ्योरम का, दैट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन दिस कोर्स बिकॉज दैट इज़ लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स एंड दैट इज़ बियॉन्ड दिस स्कोप, the scope of this course, so that is we are not going to prove that. We just understand this theorem, the statement of this theorem, so that we have some idea how we proceed if we have some sort of this type of situation कि अगर हमारे पास जो अंडरस्टडी डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें एक से ज़्यादा पैरामीटर हमारे पास आ जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमने जॉइंटली सफिशिएंट स्टैटिस्टिक फाइंड आउट करना होगा। ये हमारे लेटर मॉड्यूल में शामिल है कि हम कैसे जॉइंटली सफिशिएंट स्टैटिस्टिक फाइंड आउट करेंगे, वो भी हम आपको इसके बाद बताएंगे। जो लेटर हमारे पास मॉड्यूल्स आ रहे हैं उसमें हम जॉइंटली सफिशिएंट स्टैटिस्टिक कैसे फाइंड आउट करेंगे। जब हमारे पास ज़्यादा पैरामीटर्स हो जाएंगे तो डेफिनेटली जब हमने सफिशिएंट स्टैटिस्टिक निकालना है तो दैट इज़ कॉल्ड द जॉइंटली सफिशिएंट स्टैटिस्टिक। प्रैक्टिकली हम लेटर ऑन इसको देखेंगे। यहाँ सिर्फ इस चीज़ को हमने समझना है कि जब हमने एक्सटेंशन यूज़ करनी है, जनरलाइज्ड फॉर्म यूज़ करनी है राव-ब्लैकवेल थ्योरम की, तो सबसे पहले लेट्स से अगर हमारे पास दो स्टैटिस्टिक हैं तो उनका हमने जॉइंटली सफिशिएंट स्टैटिस्टिक फाइंड आउट करना है। फिर उसके बाद जब हम ये फाइंड आउट कर लें कि वो जॉइंटली सफिशिएंट स्टैटिस्टिक है तो फिर हमने उनकी एक्सपेक्टेशन फाइंड आउट करनी है, और जिस एस्टिमेटर के लिए हम उनकी एक्सपेक्टेशन फाइंड आउट कर रहे हैं अगर वो अनबाइस्ड हो जाते हैं तो वी से दैट कि यस दैट इज अनबाइस्ड एस्टिमेटर्स विद द मिनिमम वेरिएंस। तो बेसिकली जो थीम है इस थ्योरम का कि जब हमारे पास एक से ज़्यादा पैरामीटर्स आ जाते हैं तो ऐसी सूरत में हमने मिनिमम वेरिएंस अनबाइस्ड एस्टिमेटर कैसे फाइंड आउट करना है। तो ये थ्योरम हमें एक गाइडलाइन देता है कि हमने मल्टी पैरामीटर सिचुएशन में कैसे फाइंड आउट करना है मिनिमम वेरिएंस अनबाइस्ड एस्टिमेटर।